Hi everyone, Assalamu alaikum. This is me, Amal Khan, and today we have a very special guest with us, Taimoor Hassan. Taimoor Hassan has been working in the field of IT for more than a decade now. He is a fast graduate, and right now he is pursuing his master in the field of computer science and software engineering from Auburn University, United States. And about this discussion will be mainly about the model he has recently released by the name of Qalb. And yeah, Assalamu alaikum, Taimoor. How are you? कैसे आप ठीक ठाक? I'm doing good. Thank you for having me, man. Yeah, so Temu, starting with first of all, many congratulations. You are being, making it to the news and headlines. And I would ask how it feels to get the attention for the work you have done. I mean, this is big for me. बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है. Obviously, families are happy, friends are happy. You, me, like we both are happy, right? So it's a viral thing right now. I've been processing all this. Okay, Temu, before going deep into Kalb, I just want to zoom out a little, and that is that today in today's world we have like models, powerful models like GPT, Gemini, and Claude. Now, where do these models specifically struggle, like when it comes to Urdu? Right. So it's pretty much clear. One of the part is they don't have much data. They can have much data, but they don't have much data specifically for the language, right? That's why they Okay. hallucinate, right? One being that. Secondly, उनकी niche नहीं है ये, right? वो specifically उस language के अंदर जो है वो they're not expanding their things, right? In the products and stuff, right? So I think these 2 points are major points. Okay, Um, okay. So yeah. if I understand, one of the major point is data availability. They can have it, but they are not focused on Urdu, so they don't have it, right? Yep. It's a very big gap. Like there were no models for Urdu, but before Qalb, there were models like Alif and Lughat, and they were claiming solving the same problem, which is Urdu understanding and a specific model for Urdu. Now, what was the gap that was still remained in those models, and what did you notice personally that you tried to solve that with Qalb? राइट सो बी का फाउंडेशनल मॉडल आपके पास एक सलीसी चीज़ होनी चाहिए, राइट? एक ऑथेंटिक, एक बहुत अच्छी फाउंडेशन होनी चाहिए. दैट्स वाई आई थिंक अलिफ एंड लुगत ने जिससे स्टार्ट किया, दे हैड ओपन सोर्स जो ओपनली अवेलेबल डाटा था उर्दू का, उसके ऊपर ट्रेन किया, राइट? आई थिंक दे वर लाइक 200 मिलियन पैरामीटर्स के अराउंड, राइट? एंड सो वी हैड अ गैप, एंड फिर मैंने 7 डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर डाटा क्रॉल किया, एंड उसके बाद हमने ट्रेन किया, विच वी एडेड 1.97 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर वी ट्रेन, राइट? सो इट गेव अ वेरी गुड आउटलुक, very good Salisi outlook to the model, which actually means कि एक अच्छी output आपके पास निकल के आए. Okay, so they like Alif and Lughat, their data corpus was small and they didn't have the Urdu depth what Qalb has. Yeah, exactly. Okay, now coming to Qalb, you have fine-tuned Qalb on Llama 3.1 using low-rank adaptation. Now my question is, why didn't you build a model from scratch, and why specifically Llama? Right. So the first part of the question is कि आपने स्क्रैच से क्यों नहीं बनाया, राइट? Yeah. द बिग गैप इज द रिसोर्सेज, राइट? हम कितना ही स्पेंड कर सकते हैं अपने पॉकेट से, जीपीयूज एंड अपने टाइम के ऊपर एंड अपनी सारी चीज़ों के ऊपर, टू क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच से बनाना. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. आप फॉर एग्जांपल आप एक प्री ट्रेन और कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग के ऊपर जा रहे हैं, तो आपके पास थोड़े से ही और टाइम लगेगा उसको बनाने में फ्रॉम स्क्रैच और एक सेंसिंग देने के लिए, लेकिन आपके पास उस उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, राइट? यू आर पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट, राइट? तो वाई वी यूज लामा? बिकॉज आप जब एक फाउंडेशनल मॉडल बनाते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में बना रहे हैं. आप उसको मल्टीलिंगुअल रीजनिंग देते हैं कि पहले से Okay. जो चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, उसकी सेंस तो होनी ही चाहिए मशीन को, मशीन समझे ही उसको हमारी लैंग्वेज में, बट हाँ एक कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग रहे उसके ऊपर कि हाँ ठीक है, हम फर्दर चीज़ें, डाटा सेट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर एम्बेड कर रहे हैं, ताकि ताकि मशीन की सेंस वहाँ पर है, लेकिन फिर आप एक रीजनिंग भी प्रोवाइड कर सकें उसको, राइट? सो इफ आई एम क्लियर अबाउट इट. Okay, so it was self-sponsored GPU resources, and also it needs a big team to build something from scratch, which is understandable. Okay. अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं, how did you collect all the data? I guess it was 6 billion parameters, and then it come to 2 billion almost. So what was the whole process, if you can explain it? राइट, श्योर. फर्स्टली जो है उसकी क्रॉलिंग हमने की. जब भी आप एक अच्छा फाउंडेशन चीज़ बनाते हैं, उसकी बुनियाद बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर आपने कोई स्काई स्क्रैपर खड़ा करना हो, उसकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, राइट? सो 7 डिफरेंट सोर्सेज, बीइंग वेरी प्रिसाइज, 7 डिफरेंट सोर्सेज, एंड crawling took almost around like 2.5 months के around, estimatedly. The second part of the question was that what part of the whole process was challenging? Was it data collection, data cleaning, or model training? राइट. सो आप जब भी एक कंप्यूटर की चीज़ बना रहे होते हैं या एआई के अंदर कोई चीज़ बना रहे होते हैं, डिफिकल्टी हर हर पार्ट के अंदर ही होती है. इफ यू टेक अबाउट द स्पेसिफिक पार्ट्स, तो उसके अंदर क्रॉलिंग पे भी टाइम लगा ऑब्वियसली,
एंड वो भी एक प्रोसेस था। फिर हमने वाई कॉम्बिनेटर का एक स्टार्टअप है, उसके साथ हमने एक पार्टनरशिप क्रैक की। हमने उनका फ्रेमवर्क यूज़ करके हमने क्रॉलिंग स्टार्ट की, जो कि प्रॉपर्ली रिसर्च पेपर में मैंशन है। तो वो एक क्रैक करना, उस चीज़ को लेके आना, इम्प्लीमेंट करना, नए एल्गोरिथम्स बना के इम्प्लीमेंट करना, ऑब्वियसली टेक्स थिंकिंग एंड स्टफ, राइट। एंड सो फिर उसके बाद ट्रेनिंग का भी प्रोसेस, ट्रेनिंग का आई कैन नॉट स्पेसिफाई एंड से कि किसके अंदर प्रॉब्लम आया। आई गिव यू एन एग्जांपल, राइट। सो वी कलेक्टेड ऑलमोस्ट 6.2 बिलियन पैरामीटर्स। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इंग्लिश टैग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेडर्स होते हैं, फुटर्स होते हैं, राइट। वी क्लीन दैट, उसको हम पे 4 बिलियन पे लेके आए, वी क्लीन दैट फर्दर। फिर हम उसको जो है वो 2 बिलियन के अराउंड लेके आए। फिर वी क्लीन दैट फर्दर 1.87 के बाद हमने 100 मिलियन ऐड किया इंग्लिश का कॉर्पस भी, और फिर हमने उसको ट्रेन किया, राइट। सो द प्रोसेस नीड्स टाइम एंड एनर्जी। So Temur, if there is someone like कोई स्टूडेंट है जो अपने फाइनल ईयर में है and he want to build something on top of this model, so what you suggest and what are some ideas if you can share? राइट। सो जब भी कोई चीज़ आप रिलीज़ करते हैं या मॉडल्स के अंदर, वो 2 फेजेस में रिलीज़ होता है, राइट। एक डेवलपर्स फेज़ होता है, एक कंज्यूमर फेज़ होता है, राइट। एंड सो स्टूडेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज बोथ द फेजेस, कंज्यूमर फेज़ भी हो सकता है, डेवलपर फेज़ भी हो सकता है। एंड सो अगर आप FYP स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप ज़ाहिर बात एक प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट। आपने वो प्रेजेंट करना, उसकी कैपेबिलिटीज़ अपनी दिखानी होती हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी क्रिएटेड ऑन दिस, राइट, बिकॉज एक फाउंडेशन है ये, राइट। इसके ऊपर आप वॉइस एजेंट्स बना सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, मल्टीलिंगुअल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यू कैन इंटीग्रेट दिस टू एनीथिंग। एंड आई थिंक students should look through both the eyes, from the developers and from the consumers end, so that they can have a sense of business, a sense of consumer, and a sense of a student as well as sense of developer as well. If someone want to do the same for another language, maybe someone want to build Sindhi LLM, Pashto LLM, or maybe Punjabi LLM, what are your suggestions? What are the mistakes they should avoid? As you have been through all the process, so if you can suggest few. I think if we consider computers and trainings as a part of the process, the errors will be there, the bugs will be there, the problems will be there, right? But generically, if someone wants to create in the other language, I think they should focus on grabbing first the data, and then the second pillar would be um, The language understanding itself. the dialect. Because for Yeah. example, if you take, क्योंकि we were also doing a few bits in Pashto as well, a few bits in other languages as well. I think the most important thing is collecting as much data as possible, so that you can give sense to machine. Okay, Timur, one last and honest question which I would like to ask. If you don't want to answer, that's completely fine, but I would ask anyway. And the question is that there are people on LinkedIn or some other platforms, and they are very less in number, but still they are there. And they are saying things like, this person, Timur, he's very good at self promoting, and it's all self promotion. That's work is, it's not that major thing, and all those things. How you look at that side? I understand the appreciation is there. That's the good side. How you look at the bad side? People saying those things. How you look at that? So catering your media part, see, the media houses were connected with me since 2021, right? They saw my post. My post had 150,000 impressions, 1.5 lakh impression, bro, right? They reached out to me. We did a couple of interviews. I'm very lucky that दो बड़े media houses ने start में interview ले लिया, Geo और The Nation ने, right? And उसके बाद it became a viral loop. उस loop को मैं रोक नहीं सकता हूँ. It's not in my hands, right? And उसके बाद it kept on going, right? And so that's a part of process. I mean, अगर आपको एप्रिसिएशन मिल रही है बहुत अच्छे लेवल पे, और पहली दफ़ा किसी तरह कोई अच्छी चीज़ चल रही है, try appreciate, man. Like, if I did something from my pocket, from my time, from my resources, and done it for the community, try to be appreciative. बुरी हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ में से बुरा निकल सकता है. And so the media is not in my hands. 4,000 downloads on Hugging Face, and then thousands of people resharing, thousands of people commenting, thousands of people liking, right? Huge for me. That's what I wanted. That's all. लोग आएंगे, क्वेश्चन करेंगे. It's good to have those people too. I mean, without them, then we will be like just sitting and doing nothing. So it's okay, it's fine. Okay, thank you so much, Taimoor. Thank you so much for the time, and thank you so much for this huge contribution to the local community of AI, specifically Pakistani community. It means a lot. And yeah, see you soon again, inshallah, with so many more things to discuss. And take care. Allah Hafiz. Thank you very much for inviting. Thank you. Thank you so much. Allah Hafiz.